Good evening and welcome. You're watching Breaking Views with me, Sanctity, the only show where we get you all the views so that you get the complete picture. There is a very fundamental question that we want to ask tonight. Whether you can trust a survey that has happened in Gyanvapi Mosque case. How can you trust a survey where there is an open fight between the survey commissioners? There are open allegations of bias. In fact, one set of petitioners have actually moved court that no, get back the sacked commissioner. We feel it is going to adversely impact the findings. Such open alignment. And then, of course, leaked reports. The most fundamental question asked right here, can the Gyanvapi survey be trusted? There is an open secret of this secret report or sealed survey. It's an open secret now. Every channel has it. Everybody is discussing it threadbare. It was supposed to be in a sealed envelope. We speak to the survey commissioner, Vishal Singh, who is going to join us in just a short moment from now, and ask him these questions. What does this mean? And the various questions about the authenticity of this survey or the sincerity of this entire exercise. Can this survey be trusted? But first, based on the reports that have been shared by the petitioners, this mosque filming report has been now filed in court. A copy of that report, the text version, is now out in the open. NDTV cannot independently verify the authenticity of all this information, but since it is out in the public domain, we would like to bring it to your notice. This alleged report says, pillars in the mosque basement have engravings of flowers and kalash, which is a pot. There are carvings in ancient Hindi language found on the pillar basement. Symbol of Trishul on a wall of the basement. 2 large pillars and an arch protruding from the western wall of the mosque. Petitioners call them remnants of temples. The mosque committee opposed it. So you see what the report is doing. Any controversial bit and there is an immediate, he said this, the other person said this. The report then says that there is a conical structure found below the central dome of the mosque. Stone below the third dome of the mosque has lotus engravings on it. Just findings. Petitioners called this a temple. The mosque committee has denied it. The report then says that round structure with 2.5 feet height has been noticed in a pond used for wuzu, which is to basically clean your hands and legs before you go into a mosque. Petitioners have called this a Shivling, but the mosque committee says it is a fountain. Again, no surety given. Asked the mosque committee to run the fountain, but they could not. That is what the report says. The report also says that the object looks like a big Shivling. Has kept it ambiguous. Now here are some of the questions as far as this survey report is concerned. Not just this, but you need to know why this survey report, the questions are being asked on whether it should be trusted or not. Look at the twists and turns as far as this survey is concerned. Number one, the mosque committee, and remember this happened long back, the mosque committee accused Ajay Mishra, the original survey commissioner, of bias. Then the Varanasi court appointed 2 more survey commissioners. So there became 3 survey commissioners. The new surveyor, Vishal Singh, who's going to join us in just a short moment, complained against the old survey commissioner at a time when all of them together were submitting their report in court. It's amazing how all of this has happened. Ajay Mishra was accused of leaking information. People close to him in his team were leaking information. This on the basis of allegations of Mr. Vishal Singh, the present commissioner. Mishra allegedly appointed a videographer who leaked information to the media. That's the allegation. The court then removed this survey commissioner, Ajay Mishra, which means the court must have found something against him.
Immediately a day later, the Hindu side appealed in the very same Varanasi court to reinstate this tainted survey commissioner, sacked survey commissioner. They get him back because we feel it will impact the finding of the survey report. Vishal Singh and Ajay Mishra both have submitted their reports in the court. Both reports have been submitted in sealed envelopes, and both reports have been leaked to the media. In a situation like this, we have just these three basic questions. Can the Gyanvapi survey be trusted? Number two, what is the legal sanctity of a leaked survey like this? We have just told you the twists and turns of this survey. And number three, given the fact that this case is now in the Supreme Court, should the Supreme Court now decide on this survey matter? The Supreme Court is hearing this entire matter. Should the Supreme Court now decide the fate of this survey? Because it turns out the manner in which these twists and turns have happened over the last week, 10 days, the survey report has been reduced to a joke. I have with me, I would like to welcome Mr. Vishal Singh. He is the man who submitted his report, survey report. Thank you very much, Mr. Singh. My first question, what sort of a survey is this? And how can something that is in a sealed envelope be sealed and yet be an open secret? ये कैसा सर्वे है विशाल जी? सील बंद एप्लीकेशन जो पेपर हमने रिपोर्ट बनाई है वो तो पेपर हमने दिया है कोर्ट में, और जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है वो सील बंद है। नहीं, बट आप मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि इससे जो निष्पक्षता है इस रिपोर्ट की उस पर सवाल उठेंगे? Don't you think that the leak of the survey is going to affect the credibility of the survey as well? नहीं, बिल्कुल नहीं उठता है, क्योंकि ये जो हमने रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट सुबह दाखिल की थी कोर्ट में, वो वादी और प्रतिवादी पक्ष देखे हैं फाइल लेके, और उसमें से हो सकता है कोई फोटो खींचा हो या कोई लिख लिया हो तो वो पॉइंट्स आउट हो गए होंगे, क्योंकि जब तक ये रिपोर्ट फाइल नहीं हुआ ये कॉन्फिडेंशियल है। कोर्ट में फाइल करने के बाद ये कोई भी ले सकता है, सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकता है इसकी। ये जो सील बंद है, मैं बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, सील बंद जो है फोटोग्राफी और जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सील बंद की गई है, 3 बॉक्स में, वो सुरक्षित कोर्ट के पास प्रिजर्व है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो डिटेल है, जो टेक्स्ट है, वो सील बंद नहीं है और वीडियोग्राफी जो है सील बंद है। चलिए इस पर बाद में आएंगे। मेरा अब आपसे सवाल ये है, तो एक तरीके से मैं ये मानूं कि आपका ये कहना है कि वादी और प्रतिवादी पक्ष जो है, द पिटिशनर्स इन दिस केस, अकॉर्डिंग टू यू, दे हैव लीक्ड इट, दे हैव लीक्ड द टेक्स्ट ऑफ योर रिपोर्ट। नहीं, कराया नहीं गया, ये कोर्ट में मैंने फाइल कर दिया, उसके बाद जब फाइल देखे होंगे लोग तो अपना पॉइंट्स आउट लिखे होंगे या पक्की नकल ली होंगी, सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से लिए होंगे, मिल गई होगी उनको। अच्छा विशाल जी, मुझे एक बात आप बताइए, जो काम आपने किया, क्या आप इतने सक्षम हैं? डू यू कंसिडर योरसेल्फ केपेबल इनफ to be able to identify and perform the job of, say, an archaeological survey of India? Essentially, haven't you done their job? जी, मैं बता दूं, मैंने हर जगह लिखा है जो जो चीज़ें हैं। मैंने कहा इमिनेंट इतिहासकार से इसकी रिपोर्ट मंगा ली जाए अगर ज़रूरत अदालत समझे तब, और जहाँ जहाँ चीज़ें थी मैंने उसमें फाइंडिंग अपनी दे दी कि मेरे द्वारा ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि लीगल फील्ड की चीज़ें हैं, और जो चीज़ मैंने देखी उस चीज़ को मैंने अपनी रिपोर्ट में दर्शा दी है। नहीं, तो आप ये चीज़ मानते हैं कि जो काम आपने किया वो और आपने ये चीज़ का उल्लेख भी किया है, वो किसी इतिहासकार यानी कि सम हिस्टोरियन शुड कम एंड वेरीफाई और चेक द वेरासिटी ऑफ व्हाट यू हैव रिटन और मेंशन्ड इन योर रिपोर्ट, आइदर या तो पुरातत्व विभाग, either the ASI or historians, and that your report should not be treated as gospel. पुरातत्व की बात मैंने नहीं की, क्योंकि ये एक किताब की जिक्र था, उसमें ये वादी पक्ष द्वारा हमको दिया गया था कि इस किताब के द्वारा ये चीज़ें हैं, तो जब उन्होंने ये दिखाया कि नक्शा है उस हिसाब से वो फिट बैठ रहा था, एक पिलर टाइप पे था, तो मैंने उसको लिखा कि ये ठीक है, लेकिन इसकी जांच किसी इमिनेंट स्कॉलर, जो इतिहासकार पुराने हों या जो जानकार हों, उनसे करा ली जाए।
उस बारे में मैंने कहा। ठीक है, तो आपने कहा है कि इसको कोई एमिनेंट स्कॉलर आए और वो पुष्टि कर दे जो जो आपने लिखा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं विशाल जी, आपको नहीं लगता है आपकी ये रिपोर्ट जो है ये तमाशा बन करके रह गई है? ओपन वॉर बिटवीन टू कमिश्नर्स, रिपोर्ट ऑफ लीक, people stepping out and getting ex parte orders, all of this is happening. रिपोर्ट की सैंक्टिटी क्या रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पक्ष कुछ माननीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध नहीं कह रहा है। वादी पक्ष का ये कहना था कि जो 6 और 7 तारीख की कमीशन की कार्रवाई की गई थी, वह जो कमीशन पूर्व के कमिश्नर ने की थी उसको फाइल वो कर दी, उन्होंने फाइल भी कर दी। 14, 15, 16 की जो कमीशन है वो मेरी निगरानी में की गई थी, मैंने उसकी रिपोर्ट फाइल कर दी। और मैंने कहीं भी अपनी रिपोर्ट में कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी, जो चीज़ें वादी द्वारा बताई गई थी और प्रतिवादी द्वारा खंडन की गई थी, पूरी चीज़ें मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। और जहाँ जहाँ इन लोगों ने ध्यान आकृष्ट करा है वो सारी चीज़ें मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, कमीशन रिपोर्ट में। अच्छा विशाल जी, मुझे ये बताइए, ये जो शिवलिंग का विवाद है, दिस शिवलिंग कंट्रोवर्सी, पार्ट्स ऑफ इट हैव बीन पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट आल्सो। वुड यू लाइक टू टेल अस फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स कि आपकी रिपोर्ट में शिवलिंग को लेकर के क्या लिखा है? आप पहले मेरी रिपोर्ट पढ़ें। मेरे ख्याल से दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं, मैंने अपनी रिपोर्ट में दूसरी चीज़ लिखी है। वादी द्वारा यह कहा गया कि ये शिवलिंग है और प्रतिवादी द्वारा यह कहा गया कि ये फुआरा है। तो मैंने ये कहा है, मैंने अपनी कोई फाइंडिंग उसमें नहीं दी है। जिस आकार का है मैंने उस आकार लिख दिया। काला पत्थर है, काला पत्थर लिख दिया। So basically you have just written what you have seen and not observed on its status. So you're not going to clarify whether it is a shivling or a fountain. ये आपकी रिपोर्ट में नहीं है कि वो शिवलिंग है या फुवारा। अब ये दोनों पक्ष की मैंने बातें लिख दी हैं। अब ये देखा जाएगा, ये माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे कि ये क्या है। फोटोग्राफ वगैरह सब मैंने दे दिया है। मैं बतौर कमीशन करने गया था, बतौर कमिश्नर गया था, न कि मैं कोर्ट बन के गया था वहाँ पे। मैं जजमेंट नहीं दे सकता इस पर। बाकायदे उसकी फोटोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सब हुई है, वो सब अंडर सील है, अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ कोर्ट है। तो विशाल जी, जो मुझे समझ में आ रहा है, आपने औरों के हवाले से जो उन्होंने आपको जानकारी दी बस वही मात्र आपने लिख दिया। ऑल यू हैव डन इज इन योर रिपोर्ट एट्रीब्यूटेड वर्जन्स ऑफ पीपल एंड नॉट मेड एनी ऑब्जर्वेशन ऑन योर ओन, करेक्ट? जो जिस आकृति का मिला वो दिखा दिया, जो चीज़ें बताई गई वो मैंने बता दिया। फाइंडिंग और ये इसका जजमेंट जो है कोर्ट करेगी और जो न्यायालय का आदेश होगा वो सर्वमान्य है। जो चीजें वस्तु स्थिति जहाँ पे थी वो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखलाई है। जो ध्यान आकृष्ट कराया गया वो दिखलाया है। विशाल जी, मुझे ये बताइए कि आप डेफिनेटली क्या बता सकते हैं अपनी रिपोर्ट से? सब चीज की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, उसको हमको साबित करने की जरूरत नहीं है। वो न्यायालय खुद देख के अपना निर्णय पारित करेगी। सो हैविंग हर्ड यू, मुझे ऐसे लगता है कि पक्ष की उपस्थिति में हुई है। नहीं, आपकी बात सुन करके तो आई कैन कम टू दिस एंड अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन दैट अल्टीमेटली आइदर द एएसआई या कोई इतिहासकार, हिस्टोरियन ही वो बहुत ही स्पष्ट रूप से और इन डेफिनेटिव टर्म्स टेल अस अबाउट द रियलिटी and not a survey commissioner as yourself. नहीं, मैंने इतिहासकार का नाम लिखा है क्योंकि जो किताबें वगैरह वो दिखा रहे थे मैप वगैरह, तो उसकी मुझे उतनी डिटेल जानकारी नहीं थी। जो वस्तु स्थिति वहाँ पे मिली, बता रहे थे काफ़ी पुरानी किताब है, तो उसके आधार पे मैंने कहा कि भाई ये मेरी सब्जेक्ट नहीं है। जिसका ये सब्जेक्ट है वो अपना उस पर रिपोर्ट दे देगा। वो न्यायालय मांगेगी, अगर उचित समझेगी तो न्यायालय मांगेगी। ये बताइए, why should people have to suffer an ugly brawl between survey commissioners like you and Ajay Mishra? ये इतने ओपनली आप लोग लड़े एक दूसरे, मतलब आप अदालत में उनके खिलाफ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका कोई पर्सनल मोटिव है। ऐसे में संदेह प्रकट नहीं होगा आपकी सर्वे रिपोर्ट पे? What does this mean as far as the authenticity and the sincerity of a survey exercise? नहीं, ऐसा कुछ
ये देखिए, विश्वसनीयता सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया गया। मैं बता दूं आपको, ये विश्वसनीयता और इस कमीशन रिपोर्ट पे कोई प्रश्न चिन्ह न उठाए, इसलिए ये कदम न्यायालय ने उठाया। मैंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन दिया था कि ये कौन रिपोर्ट बनाएगा या कौन ये करेगा, और उसके बाद माननीय न्यायालय में ये सुनवाई के दौरान तीनों कमिश्नर वहाँ मौजूद थे। प्रतिवादी संख्या 4 जो है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जो ये इनकी टीम में एक सर्वे फोटोग्राफर गए हुए थे, प्राइवेट फोटोग्राफर, वो शाम के समय में बाइट दे रहे थे और एक वादी पक्ष की तरफ से ये पूरी बातें कह रहे थे। तो अगर वह रिपोर्ट बनती तो उस रिपोर्ट की कितनी विश्वसनीयता रहती, ये सोचिए। जब एक आदमी टीम का है, वो वादी पक्ष की तरफ से बोल रहा है, तो उस रिपोर्ट की कितनी विश्वसनीयता रह जाएगी। उस विश्वसनीयता को बचाने के लिए माननीय न्यायालय ने भरी अदालत में ये आदेश पारित किया, ताकि यह जो कमीशन की, सुन लीजिए, जो कमीशन की कार्रवाई है निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव की गई है। और आप रिपोर्ट देखेंगे तो एकदम साफ जाहिर होता है कि जो वादी ने कहा और जो प्रतिवादी ने कहा, सारी चीजें साफ साफ लिखी हुई है। नहीं, वो तो आपने लिख दिया। आप कह रहे हैं कि ताकि सवाल ना उठे, एंड दैट द रिपोर्ट इज अबव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन और डाउट। सवाल तो उठ रहे हैं, क्वेश्चंस आर नाउ बीइंग रेज्ड ऑन योर रिपोर्ट। आई हैव जस्ट लिस्टेड आउट द ट्विस्ट एंड टर्न्स। नहीं, आपको ये लगता होगा ये एकदम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और बड़े ही मेहनत से बनी हुई है। जो चीजें कही गई थी वो उसके आधार पर बनी हुई है, और अपनी कोई भी हमने इसमें फाइंडिंग कुछ नहीं दिया है। मेरा काम था कि जो वस्तु स्थिति वहां जाके देखना कमीशन के दौरान, वही वस्तु स्थिति इसमें लिख देना अपनी रिपोर्ट में, और माननीय न्यायालय इस पर अपनी फाइंडिंग। जाते टुवर्ड्स द एंड, वुड यू लाइक टू टेल मी, आप मानेंगे कि ये मसला जो है इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर? ये तो मानेंगे? ये देखिए, ये आप लोग फोर्थ पिलर हैं, फोर्थ पिलर कहलाते हैं मीडिया जो है, और पहला मैं चैनल ऐसा देख रहा हूं जो ये बात कह रहा है। अच्छा। कोई भी कैमरामैन या कोई फोटोग्राफ या कोई चीज लीक नहीं हुई है, वो कहीं प्रमाणित नहीं कि कहीं लीक हुई है। पहली बार आपने कहा है ये चीज, और वो कॉन्फिडेंशियल है, कोर्ट के प्रिजर्वेशन में पूरी चिप रखी हुई है, और किसी के पास वो नहीं है। हम लोग कमीशन की रिपोर्ट बनाते समय भी हम लोगों ने कभी उसको देखा भी नहीं, ना जानकारी हम लोगों को है जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी हुई है, और एकदम निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के और अच्छे माहौल में दोनों पक्ष उधर उपस्थित थे। मैंने उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, और एकदम शांतिपूर्ण माहौल में, जो आप कह रहे हैं कि अशांति हो गई, ये हो गई, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में कमीशन की कार्रवाई संपन्न हुई है। दोनों पक्ष वहां उपस्थित था। I have never said Ashanti, and also you say आप पहले चैनल हैं. Well, I am very happy to be the first channel in your life to have asked you this question. But you know, you constantly, Mr. Singh, are mentioning videos have not been leaked. But the truth is, information तो लीक हुई है ना. आपकी रिपोर्ट का जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो तो लीक हो गया, और अब उसका राजनीतिक उपयोग भी हो रहा है. आपको नहीं जानकारी होगी, जब मैंने कोर्ट में फाइल कर दिया उसके बाद ये अपने आप ओपन हो जाएगा. जब ये कोई चीज़ फाइल हो गई, डॉक्यूमेंट जो प्लेंट होता है, अगर वो फाइल हो जाता है कोर्ट में, तो डिफेंडेंट को पता चल जाता है. और ये कोर्ट में सुबह 10 बजे का फाइल है, फाइल कोर्ट में पड़ी हुई है, तो उसको कोई देख ही लेगा उसको. ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है. जब तक ये फाइल करने से पूर्व तक की मेरी जिम्मेदारी है कि कॉन्फिडेंशियल रहे, इसकी जानकारी किसी को प्राप्त हो. ठीक है. फाइल करने के बाद ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया. इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी मिल जाती है. जैसे हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं, सेल डीड एग्जीक्यूट कराते हैं, वो सेल डीड होने से पहले तक उसकी जिम्मेदारी जो ओनर होता है उसकी होती है. अगर सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाती है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है. उसी प्रकार से ये है. आप बार बार तथाकथित कर रहे हैं. एकदम निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव की रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट को पढ़ने से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये रिपोर्ट में सारी बातें जो कही गई हैं, मैंने अपनी कहीं फाइंडिंग नहीं दी है. जो चीज़ें देखी गई हैं वो फोटोग्राफी में कैद है, और जो चीज़ें देखी गई वो वीडियोग्राफी में कैद है. ठीक है.
Vishal Singh ji, thank you very much for joining us. Let's throw this open to a short discussion also. I have Ajay Gautam, founder of HumHindu.com, and Tasleem Ahmed Rahmani, president of the Muslim Political Council of India. And my question is very simple. Mr. Rahmani, I want to begin by asking you, given the twists and turns as far as this survey report is concerned, do you think that the Supreme Court must settle, because this matter is in the SC, do you think that the Supreme Court must settle the issue on whether the recommendations or findings of this survey report should be acceptable or not? Saket, first of all, such kind of survey reports are not maintained as an evidence in any court. This is just a preliminary information which they may have taken through the camera, videos, etc. But it is strange that such report is say that it becomes a public document even before going to the pursuing honorable judge. Even before that, it becomes a public document. This is highly questionable opinion. Secondly, the Supreme Court ultimately, this is the first case I am watching, which is being pursued in all the three courts, in the district court, in the high court, and in the Supreme Court. All the three courts simultaneously. So ultimately, it has to be settled by the Supreme Court of India, but in the same process, it will come through from the lower court to the Supreme Court of India at the same time. So this is something a very new. It will certainly going to set a precedent that one single case can be heard in three simultaneous court level. So it is something very strange. Ajay Gautam, मैं आपके पास आना चाहता हूँ. Okay, Ajay Gautam, I want to ask you this question. You know, not even going into the leaked findings of this survey, I just want to know from you, if you look at the manner in which the twists and turns have happened, right from Ajay Mishra, allegations against him, new survey commissioners, him being removed, accused by another survey commissioner, Hindu petitioners openly petitioning for his reinstatement, and then individual survey reports being filed in the court, and then all of this, despite being in a sealed envelope, coming out in the open. Don't you think that this raises doubts over the legal sanctity of a survey process? Yes, I agree. I agree with you. The legal sanctity has been questioned. What kind of events has been reported daily basis? But I do not require any kind of support with regard to the Gyanvapi temple. I do not require it because the notified and declared Takai Aurangzeb Alamgir has been written itself in his textbook. He is commanding to the commanding general of the Uttar Pradesh. He should be destroyed. The Gyanvapi, the Kashi Vishwanath temple, and all Sanskrit schools running at that time. When he admitted, the Alamgir Aurangzeb admitted itself, and it has been all in public domain. That document is available in public domain. So what else is required? Why we are wasting the public money for? नहीं, मुझे आपकी थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, अजय गौतम जी. ऐसा है, there is a legal process which is being followed. I can understand the legal process, right? The matter is in the courts. I am asking you, you are saying that there is no need for any survey, there is no need for anything, because you believe that this is what it is. This is not my belief. Then we need no places of worship act. According to you, perhaps we don't need the Supreme Court also. Sir, Sankit ji, what all I am saying. So you want another Babi Masjid? Both here in demolition. The fact is admitted by the accused itself. Yes, he is responsible for destroying the Kashi Vishwanath temple and another 60 temple at Banaras and all Gurukuls. But how will you say? Let's just say that you are right. Let's just for argument's sake. How will you legally prove this? There has to be a process, right? Now we can talk about the political side of why this is happening in a separate debate. I just want to ask you that if a survey has been ordered by the court, its sanctity has to be above suspicion. Don't you think that in this case, Mr. Rahmani, its sanctity is not above suspicion? It is certainly, because you see, the court has ordered to submit the report on 17th of May. But on 16th of May, when this commission was completing its report, its photography, at 10 a.m. in the morning,
one of an unconcerned person, unattached person, reached to the same court on 16th May and present an application to seek some relief. And the court, without consulting any concerned party, they grant the same relief. So this my point is, whatever be the motive, so many accounts. if you have for some reason kick-started an exercise on conducting a survey, thank you very much, gentlemen. If an exercise has been commissioned, it cannot be reduced to a joke. Thank you very much for watching Breaking Views. News continues on the other side.